प्लीज आप मुझे फिर बताएंगे आपको स्लाइड जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है? जी मैडम, मुझे अपनी स्लाइड नज़र आ रही है और मुझे इसकी वो राइट्स दीजिएगा ताकि मैं इसे मूव कर सकूं। सर राइट्स मेरे पास है क्योंकि आप अपने फोन लैपटॉप से स्क्रीन ना शेयर कर रहे हो, तो इसे मूव मैं करूंगी, आपने ना सब मुझे ये कहना है कि नेक्स्ट कर दें, तो मैं नेक्स्ट करती जाऊंगी, ठीक है? ओके मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए कैन आई ठीक है, स्टार्ट थैंक यू। नाउ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आई एम ऑडिबल, आई थिंक सो। एनी पार्टिसिपेंट्स कैन? जी जी सर, जी सर, आपके पास आ रही है। Okay, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Dear colleagues, today we will discuss the very important topic related to the financial management. So, this topic is related to the drawing and disbursing officers, its responsibilities, administration, and financial management. So in the colleges, we should try to connect with the community directly with reference to their background. So in colleges, the most of the time the principals are the DDO. Maybe in some areas, in some colleges, vice principal may be declared as a DDO. But anyhow, more than 99% colleges, the principal is the DDO. So if the head of the organization is DDO, then he is authorized to use public money being provided to him. But in the beginning, one thing should be very much clear that there is a principal accounting officers in the department, and then there are DDOs. There are so many DDOs in higher education department, around 1000 DDOs, but there is only one principal accounting officer available in the higher education department, that is secretary of the higher education department. So principal accounting officer is basically you should know that the principal accounting officer is overall in charge of the financial management, but DDOs are the directly responsible to handle the financial management and to handle the financial matters of the colleges. Next, madam, please. Next, madam. So the previous slide was related to my brief introduction. Currently, I am working as a deputy managing director in Punjab Education Foundation. So I belong to your community and I am from higher education department, but most of the time I served in the you can say in the offices and perform as administrative duties. So I started my administrative duties in higher education department from November 1999. I was posted as section officer in higher education department, and from 99 onwards, I served in different departments in higher education department, in school education department, in DST, in women development department, and now I am working in Punjab Education Foundation. Next, madam. This would be the sequence of the discussion today. We will see the definitions, important definitions, then abbreviations which are related to the DDO. Uh, what are the core powers and the key responsibilities of the DDO? Likewise, how to handle the cash, administrative role of a DDO, receipt collection, bill preparations, relevant books and rules, budget performance, challenges and way forward. This would be the you can say overall sequence of the discussion. Next, ma'am, please. This is a very simple and you can say the most you can say famous I can say it, the definition of a DDO. The officer who prepares estimate, this is the red portion of the discussion, prepares estimates of the expenditure and incurs expenditure in respect of the office of which he is the drawing and disbursing officer as appointed by the respective authority under his administrative control. So there are 2 to 3 important points. One, it means the officer who is preparing estimates. Estimates means the budget. Why it is called estimates? Because when you prepare the budget, that is your proposal. When you prepare a budget of your college, that is your proposal.
Now this proposal will be presented to the deputy director colleges, then to the director colleges, and then to the DPI. They will rationalize your demand and your request, and then it will be presented to higher education department in consolidated shape, which will further submitted to finance department for approval and printing in the budget book. So all these steps are basically to rationalize the demand. So your demand is estimates. When it will be printed in the budget book, then it will be called a budget. So your document, which is based on a performa, we will see the performa in the presentation as well. So your proposal and your demand, which is available on the performa, which is available on the document, that is estimates. So the officer who prepare estimates means who prepares budget of the expenditure, expected expenditure, because you are preparing the budget in the June of the current financial year for the next financial year. So this is estimate. So you expect with the based on the previous you can send data with the based on the previous your experience that such and such amount is required in the relevant heads to run the college, to run the institute, to run the relevant office. So you have the experience, you have the background data, you have the you can say trend of expenditure available in your office. So based on the available documents and the historical data, you prepared estimates for the next financial year. And incur expenditure means when this estimate will be approved and the funds will be provided to yourself, then you will incur the expenditure. Then you will use these money, these this public money, use these funds. Definitely, when you are using the funds, you will see the rules and you will follow the rules. This is mandatory. So up till now, there are two main points that the officer who prepares estimates and incur expenditure is called DDO. DDO means Drawing and Disbursing Officers. And if when you see the drawing and disbursing words, drawings mean to draw the money and disbursing mean to disburse the money. So the title is Drawing and Disbursing Officer. DDO means who authorized to draw money from the public exchequer and to use the money as per law with reference to the available documents. So you should know that budget is printed and you receive a printed budget in relevant heads. Figures are available like electricity, utilities, gas, water, petrol, repair of machinery, repair of transport, salary, non-salary budgets, others, cost of others. There are different heads. Uh, in higher education department, I think so more than 42 heads are being used. So in these heads, the funds are being, you can say, placed by the authority. And remember, these basically heads provided by yourself when you were prepare the estimates at the time of preparation of estimates, you filled these heads based on your historical data. So this is very important. And the next is in respect of the office of which he is the drawing and disbursing officer. It means that who prepare the estimates and incur expenditure is authorized only for the institution where he is posted or he or she is posted as DDO. He can't use the money of the next college or the neighboring college. He is just authorized to the college where he is posted. And then as appointed by the respective authority under his administrative control. It means you should have an order from the administrative control that you are declared as DDO. In some cases, like you regularly appointed as principal, it means you are by default you are DDO because you are regularly appointed as principal of the college. But in some cases, you have taken over the charge of the principal as additional charge on additional charge basis. Then you have to declare like vice principal can take over the charge of the principal as an additional charge basis. Then you have to declare yourself by the authority as a DDO as well. So like deputy director colleges can take over the charge of the principal. A principal can take over the charge of the deputy director colleges. So based on these, you can say arrangement, you have to
collect a document, you have to receive an order from the government. Government mean higher education department. They will decide, maybe the powers will be delegated. DPI can declare a DDO. In most cases, DPI can declare a DDO. So any authority, which is whether it is a direct authority or is a delegated authority, he can authorize and declare a person as DDO. So with conclusion of this definition, a person who prepare estimates, who is authorized to use money with reference to the institute where he is posted, and then he should have a letter, an order that he is a DDO of this institute. So based on this definition, we will move forward to see further that how a DDO perform its duties during his stay over the institute. Next, ma'am, please. So these are very important abbreviations being used in the documents of the finance department as well as P&D department. P&D department means planning and development department. So there is a bifurcation. Finance department is dealing with non-development and development budget of the province. But P&D department is just dealing with the development budget of the province. So for the development budget, for the projects, for PC1s, P&D is authorized. For non-development budget and development budget, finance is authorized. But for development budget, when P&D will decide that these funds are required to be provided to this college for construction of a building or a purchase of a vehicle or a purchase of furniture, then finance will release the amount without any hesitation because the entire process has been completed by the P&D department. But in non-development case, like salary and non-salary portion, so salary and non-salary portion is a non-development budget. So for this purpose, you don't want to submit, you don't have any, you can say, a requirement to submit your document to P&D department. You are directly linked with the finance department for non-development budget. So these abbreviation you can see in the documents issued by finance department as well as your directorate and DPI office. So please see these abbreviation. These are very important. MTBF, this is medium term budgetary framework. So medium term budgetary framework is basically a performer which is required to be used at the time of preparation of non-development budget. When you are preparing a non-development budget, every college at the moment, every college from last many years is preparing its budget on the MTBF performer. This is medium term budgetary framework. This performa is, you can say, circulated in the province, and now every institute is preparing their estimates and budget on this performa. This is different from the traditional budget. How it is different? The traditional budget was a performa based on a figure of 1 year. Like in previously, you can see the budget of the financial year of 2025 and 2026. But in MTBF, you can see the figures of 3 years, 25-26, 26-27, and 27-28. So from 25 to 28, you can see the figures in the budget book. After this training, at any time, you can see the budget book. Budget book is available on the website of finance department. You can open the budget book and you can see the budget book of your college, of other colleges, of health department, of any department. You can see the budget. That is a very interesting document. You can see and you can observe that the figures of the 3 years is available. So now the performa which is being used for preparation of non-development budget is called MTBF, means medium term budgetary framework, based on the figures of 3 years. Figure of the current financial years and projection of next 2 years. Then MTDF, again it is a performa medium term development framework. This performa is used by P&D department for a development budget. Again, the projection of 3 years, you can see, like if your college received funds in the development budget for construction of a block. So if the block scheme of a block is available and printed in the IDP book, then you can see the figures.
the allocation of the construction of block for the financial year 25-26, and further for 26-27, how much money will be committed, and in 26-27 and 27-28, if the project is required to be completed in 2028. If it will be completed in 27, then 2 years figure will be available. If 3 years the gestation period of the project is, then the figure can be seen at the closing of the 28 as well. So again, it is a performer. So the important one is that these are two performers being used in the province for development and non-development budget, for preparation of non-development development budget. Then ADP is annual development program. Annual development program means a budget, a part of budget or a separate budget book based on all details of the projects available in the province, including the projects of higher education department. Again, it is important book. You can see this book available online on the PND website. You can see, you can open, you can see the entire projects of higher education department printed on certain pages, started from higher education, the summary of the higher education department, and then the detail of each and every project. You can see that. Then SNE, schedule of new expenditure, important abbreviation. This is used when you are trying to create a new post. When you will create a new post, that will be called an SNE post. So it is a new expenditure. So for 3 years, you have to continue your SNE budget separately. After 3 years, your college or your institute is eligible to merge the SNE post in the regular budget. Like, for example, if your college has already 60 seats of a faculty, from a lecturer to associate professor or a professor, and now you want to create another post of a lecturer in computer science or in sociology. So this is the next post. This is a 61st post for the college. So this is SNE post. For 3 years, you will prepare two budgets for 60 posts and for one post. So two separate sheets of the budget will be presented to the DPI office and to the director office. Again, this will be presented to the finance department consecutively for 3 years on separate sheet. After 3 years, your college is eligible to merge this new post into the regular budget for 60 posts. So you can submit a combined budget of 61 posts to higher education department, but with the consultation and approval of finance department. You can't do it at your own self. You have to uh, go to the finance department to take permission for merger of this post. Most of the cases from last 14 years, from 13 years, and more than 15 years, the SNE posts are continued. So I use the word that after 3 years, your college is eligible. You can't merge without the permission of the finance department. So after 3 years, you can start your work for the merger of the post. When the finance will approve, you can merge it. Then the PC1 Planning Commission Performer 1, this is a document of a project. When you prepare a PC1, it means you are planning to develop a project, you are planning to execute a project in your college or in your institute. The projects can be for construction of any building. The project can be for purchase of a furniture only, or computer only, or transport only. The project can be for purchase of a land as well. The project can be a combined requirement, means construction of building plus purchase of furniture plus purchase of land as well. So it can be a combined, it can be a separate. So a project which has, you can say, a detail related to a project which is required to be executed in the next years, that is required to be presented in the shape of PC1. That performer is called Planning Commission Performer 1. The Planning Commission Islamabad prepared these performers. These performers are available at the websites of Planning Commission as well.
These are 5 performers, PC 1, 2, 3, 4, and 5. This is not my topic, otherwise it is a long detail. I can share all the detail, but this is not the topic as well. So, to the extent of PC1, you should know that this is a document which is required to be developed for the execution of any project. AA. Again, it is linked with the development side. AA means administrative approval. I think Mr. Sijad is giving a remarks that what is the difference between the PC1 and the ADP. Okay, ADP is a book. ADP is a development budget where all PC1s are reflected. PC1 is a document of a one project and ADP is a combined development budget in which all PC1s, all projects are reflected. The next is A. A means administrative approval. Administrative approval means when the project will be approved, a, a letter will be issued by the higher education department, which is called administrative approval of the project. As and when this letter will be issued, it means that execution can be started. So it is a very important document. So AA means administrative approval of the project. Then MPR and SMDP. DDO should know what is AA, what is PC1, what is SNE, and then what is MPR and SMDP. Previously, MPR means monthly progress report. It was prepared by Higher Education Department and submit a hard copy to P&D Department on monthly basis based on the detail of all projects, that how many funds are used by the projects and which project has been approved and which project is going to be approved, which is still unapproved, where is the court case, which project is being completed. So all details. Now it is converted and online portal is available that is called Smart Monitoring Development Projects, SMDP. This portal has been developed by PITB and now it is available in Punjab. Now you can see each and every detail of the project on this portal along with pictorial evidences, along with the update, along with the videos of the site. So now every department is bound to submit their monthly detail of the projects on SMDP portals. AD. Finance department is using this word. AD means administrative department. When you will visit finance department or P&D, then they say this is not our responsibility. Please go to AD. Please visit AD and ask AD to submit the case. AD means the administrative department. Next, ma'am, please. Okay. DAC, Departmental Accounts Committee. These are 3 committees reflected as DAC, SDAC, and PSC. These committees are required to be settled and discuss the audit paras of the department. So DAC is Departmental Accounts Committee, chaired by the Secretary Higher Education Department. Previously, DAC can be chaired by the Deputy Secretary of the department, but now as per the latest instruction of Finance Department, DAC is required to be chaired by the Secretary as well. SDAC, Special Departmental Accounts Committee, this is the second step, means DAC is the first step. Your paras will be discussed in DAC first, and then it will be submitted to the SDAC if these paras will not settle in DSC. But now the bifurcation has been changed. SDSC just discussed the paras which are called PDP paras, PDP, proposed draft paras. So PDP paras are required to be directly submitted to SDSC. Again, SDSC will be chaired by the Secretary Higher Education and Secretary School and Secretary Health. It means an administrative secretary of the all departments. So this is the second step. You have to, so being a DDO, you should be very much clear that your paras, your audit paras are required to be settled at the level of SDSC and DSC. Your paras should not go to the PSC. PSC is a very senior forum, and if I have the time, I can share the detail of the PSC. But PSC, Public Accounts Committee, is beyond your control, even beyond your control of your secretary, even beyond control of your
you can say, the finance department and beyond the control of the, you can say, chief minister as well. That is very independent committee. Most of the time, the public accounts committee is being chaired by the leader of the opposition of the concerned parliament. So in Punjab, the leader of the opposition will chair the public accounts committee. So leader of the opposition is authorized to decide anything. This is very independent committee. So try to settle your paras, which is very important, which I want to share with you, which is required to be in the knowledge of the DDO. That try to settle your audit paras at the level of DSC or SDSC. PSC is a senior forum. Again, it is not my topic. Otherwise, I can share a detail of the PSC, how to prepare a working paper, how to present your case, and how to prepare a working paper of the audit para. But this is not a direct, you can say, topic, so I can't share any detail. Then appropriation. Appropriation means provision of funds. This term is used by finance department. Then reappropriation. Reappropriation means that reallocation of funds. Like if you want to change your budget, so there are two times. There is, you can say, a provision of you can say in the financial year that twicely you can change your budget. First, that is called first list of access and surrender, and the second list of access and surrender. First list of access and surrender is due in December, and second list of access and surrender is due in March. So first you can submit your change of budget in December if you want to change. What type of change? Like your funds are available in the head of purchase of furniture, and you want to shift these funds to the purchase of computers, or to shift in the repair of transport. So from the head of the purchase of furniture, you want to shift some money to repair of transport or to repair of you can say vehicles. So you can't do that. So you have to prepare of your case and submit to the relevant authority. They will allow you, and that permission, that reallocation will called reappropriation of budget. So reappropriation means reallocation of budget from one head to the other head. Then misappropriation. It means that unauthorized expenditure, like you use the money from the head of the furniture for the repair of transport. So the money was reserved, the money was available under the head of purchase of furniture. You use the funds of furniture for the repair of vehicle. This is a public money, but it is bifurcated in the heads. You can't change the arrangement of the heads. Otherwise, reconciliation cannot be possible for the finance department. If you are authorized to change your budget, then at the end of the financial year, who will know that how many funds are being used or have been used by the all institution of the province during the financial year? Because this is requirement of the finance department. They will calculate on the basis of the utilization, headwise utilization of the institution, and calculate and consolidate, and then they present to the parliament that during the last financial year or during the current financial year, in the relevant head of the purchase of furniture, all institutions and departments of the province used 20 billion or 20 million or 30 million or 1 billion or 2 billion, whatsoever the total is. So this consolidation cannot be possible if you have to if you will change your you can say heads at your own level. When you will present your case to the authority, they will record in the previous documents, in the available documents, in the historical data, that these funds are being shifted. At the time of reconciliation, then there will be no problem, because it was in the knowledge of the finance department that these funds were shifted from furniture to the repair of vehicle. So this is called reappropriation, and misappropriation is
without authorization use of money of other head for another head. This is audit para. So when you will misappropriate the funds, you will face the audit para from the audit team. Reconciliation means verification of expenditure on monthly basis. Every principal is bound to submit your estimates as well as your expenditure on a you can say on a separate register entered with relevant entries and submit to the district accounts office for reconciliation. In Lahore, the principals are required to reconcile your figure with the AG Punjab, and in different districts, in other districts, all district accounts officers are authorized to reconcile the statements of financial statements of colleges and other institutions on monthly basis. AIR, audit and inspection report. When audit team completed its work related to the audit paras, then they prepare the first document that is called audit and inspection report. They share this report with the DDO, and based on the discussion, then some paras will be settled or dropped at the beginning, because you present your document and request to the audit team that these documents are available, please drop this observation. So after the consultation and discussion, then AIR is now converted into audit paras. So AIR is the first document which is being presented by the audit team to the DDO based on the observation during the scrutiny of record related to the financial matters. Next, madam, please. Thank you. I'm audible now जी? अब मेरी आवाज आ रही है जी? काइंडली कोई? जी सर, आपकी आवाज आ रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सॉरी जी, डिस्कनेक्ट हुए थे। सो BM means budget manual. So budget manual means instructions issued by finance department for preparation of budget documents as well as other financial issues. PFR, Punjab Financial Rules. This is a very important document. It should be available with all DDOs. Means all rules related to the use of public money. It is a detailed document, very comprehensive book of rules related to the handling of cash as well as handling of
financial documents. Ordinary paras. Audit paras with minor observations. There are the bifurcation of audit paras now. Ordinary paras means an audit para with an observation, but not so serious. Then draft paras, audit observations with serious observation or major observations, like recovery or inquiry or misappropriation or use of public money without any record, like these. This is called the draft paras. Then MEFDAC. MEFDAC means Memorandum for Departmental Accounts Committee. It is in between ordinary and draft paras. In some cases, draft paras are recommended to the DSC to discuss and settle, and these are not draft paras, but these are not ordinary paras. Serious, more than serious than ordinary paras, and less than serious of the draft paras. In between of these are called MEFDAC paras. But the forum for MEFDAC paras are DSC. It will not be discussed in STSC. PIFRA, again important, ये आप सुनते रहते होंगे. सो प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था आज से 20-25 ईयर्स बैक. सो पिफ्रा है सैप सिस्टम से कनेक्टेड. जो आप सारा ऑनलाइन बजट देखते हैं, ये पिफ्रा प्रोजेक्ट था जिसने आपके बजट को ऑनलाइन किया. सो सैप इज systems, applications and products. Now your budgets are available at SAP. आप पिछले इस लास्ट मंथ में, यानी इसी दिसंबर में जो अभी क्लोज हुए, इसमें कोई 20 दिन सैप सिस्टम क्लोज रहा है. तो जो फाइनेंस से डील करते हैं उनको पता होगा, कोई किसी जगह पे कोई बिल जमा नहीं हो रहा था, कोई डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस आपका बिल एंटरटेन नहीं कर रहा था, क्योंकि सैप सिस्टम क्लोज था. वो अपग्रेड कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट. ये फेडरल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है. तो जब सैप सिस्टम क्लोज हो तो आपका बजट प्रेजेंट ही नहीं हो रहा होता. जब तक ऑनलाइन बजट नजर ना आए, आपका आजकल हार्ड कॉपी, बजट की हार्ड कॉपी या आपका बिल एंटरटेन नहीं होता. ऑनलाइन बजट का होना जरूरी है. ये ऑनलाइन बजट पे आगे बात करते हैं. सो नेक्स्ट मैडम प्लीज. So these are the core powers and key responsibilities of the DDO. So I have seen a lot of abbreviations, a lot of important issues. We have discussed the definition of the DDO. So these are the core parts and responsibilities. Draw government funds from treasury. This is the first and important part of the DDO. He can draw funds from the government treasury. Authorize payment salaries of the staff. He is authorized to pay to the vendors and as well as to pay the salary. Vendor means if you purchase someone from any required official items, you are authorized to pay the money, whether it is a tender, whether it is the payment is being made through tender, whether it is a quotation based purchase. So it is a single quotation or a 3 quotation or a tender. Whatsoever the procedure was, you have to pay the money to the vendor, to the party, to the private party who provided the items according to your requirement. Like you purchase 10 or 15 chairs, you purchase a computer, you purchase tires of the vehicles. So anything which is required for your college or for your institution, you can purchase. Approve routine expenditure within budget limits. He is authorized to approve bills, salary bills, TA bills, purchase bills within the budget limits. If the funds are available in the TA head, he can approve the TA bill of any person. If the funds are available in the head of salary, he can accept the request of salary. If the funds are available in any certain allowance like MPhil allowance or PhD allowance or any other special allowance, if budget are available, he can entertain the bill, he can sign the bill, he can prepare the budget. Commit expenditure according to approved estimates means the available budget, the approved budget. Within the approved budget, he is authorized. He can't change the approved budget, figure of the approved budget. Manage financial records and audit. So these are the core parts. These are not the total parts of the DDO. These are the core parts of the of a DDO. So record, maintenance of record for audit purpose is the most important thing, because each and every DDO is responsible to submit their documents to the audit team as and when required. This is very important. Then key responsibilities. Preparation of budget estimates.
This is the responsibility of the DDO to prepare budget. Ensuring lawful spending. Spending means use of money. So he should ensure that the spending is as per approved laws. Budget monitoring and reporting, again, it is the responsibility of the DDO. He is responsible to monitor the budget and to report the budget to the relevant authority, how much funds are available and how much funds are required for the next 2, 3 or 4 months or for the remaining period of the financial year. Coordination with FD. FD means Finance Department, PND, Planning and Development Department, DAO, District Accounts Office, and TO, Treasury Officer, and AG Office for the settlement of different issues. Maintaining accounts and documentation. Again, it is this core responsibility of the DDO to maintain accounts and to develop documents like cash book, stock register, budget register, bill register. There are so many registers required to be prepared by the principal as well as the DDO. So these documents are required to be submitted to the audit team at the time of inspection of your finance, inspection of your accounts. Next, ma'am, please. Cash handling. Again, it is important duty and the responsibility of the DDO. How to handle the cash. जब आपके पास कैश आ जाए तो कैसे उसको हैंडल किया जाए. There are a few important things to prepare budget estimates of receipt and expenditure. कैश हैंडलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसने एक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनानी होती है जिसमें आमदनी दिखानी होती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दिखाना होता है. आमदनी क्या है? जो उसको बजट आया है. क्वार्टरली बजट आता है आजकल, तो क्वार्टरली पहले क्वार्टर में कितना बजट आया, किस किस हेड में आया, वो सारा रजिस्टर के ऊपर एंटर होता है. हर पेज डिफरेंट पेज होते हैं, हर पेज के ऊपर आप उसको पेज की हेडिंग के साथ अपने हेड्स को एंटर करते हैं. फर्नीचर का रिपेयर का अगर हेड है तो पूरा 1-2 सफ़ा आपने उसी के लिए दिया हुआ है. एक साइड पे उसकी अमाउंट है 2 लाख अमाउंट उसकी पहले क्वार्टर में आई है. अब 2 लाख का दूसरे पेज सामने वाले पेज पे उसका एक्सपेंडिचर शो होता जाएगा. सो रिसीट और एक्सपेंडिचर आमने सामने आती है. पहले समरी आती है शुरू में रजिस्टर में और बाद में हेड वाइज चलता जाता है और हेड वाइज पता चलता जाता है. तो नाउ वी आर इन जनवरी. सो इन जनवरी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑल दीज हेड्स. आप रजिस्टर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा फर्नीचर में 2 लाख आया था, पीछे अभी 1.5 लाख पड़ा हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी के हेड के अंदर हमारे पास 15 लाख आया हुआ था, 6 महीने गुजर गए हैं, अब जनवरी में हम पहुंच गए, हमने उसमें 15 लाख में से 8 लाख खर्च कर लिया, 7 लाख पड़ा हुआ है. दिस इज ये कैश हैंडलिंग है क्योंकि ये कैश आया हुआ है उसके पास जो बिल्स के जरिए ड्रा कर करके पे कर रहा है. वो चाहे सैलरी कर रहा है, चाहे वेंडर पेमेंट कर रहा है, चाहे बिल्स की पेमेंट कर रहा है. प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ बिल्स क्लेम्स टू द अकाउंट्स ऑफिस फॉर प्री ऑडिट. ये कैश हैंडलिंग का सेकंड काम ये है कि जब वो बिल्स और क्लेम अकाउंट्स ऑफिस में भेजेगा प्री ऑडिट के लिए और अप्रूवल के लिए, तो उसको पता है इसमें से कितना पैसा आ रहा है, इसमें से कितना पैसा टैक्स का है जो टैक्स के लिए जमा होना है, जो डिडक्ट हो जाना है, जो बाद में मैंने जमा कराना है, कुछ उन्होंने एट सोर्स डिडक्ट कर लेना है, और कितने पैसे हैं जो रेलिवेंट लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाने हैं. ठीक है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे शिफ्ट हो जाते हैं. और कुछ चेक्स आपके पास रिसीव हो जाते हैं जो वेंडर के नाम के होते हैं. उन चेक्स को आप वेंडर को रिसीव करवाते हो, वेंडर की रिसीविंग रखते हो. ये परचेज का एक डिबेट है, मैं डिटेल में नहीं जा सकता, ऑलरेडी टाइम बहुत थोड़ा है. बट वो चेक्स आप उनको रिसीव कराते हो. वो चेक्स बेसिकली कैश होता है, जो ही वो जाके बैंक में जमा कराएगा फंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. टू ड्रा मनी फ्रॉम द ट्रेजरी. ट्रेजरी से जाके पैसे निकलवाना. लाइक कि जी आपने चेक डीडीओ के नाम का चेक है, आजकल बहुत कम डीडीओ के नाम पे चेक बनते हैं बट इन सम केसेस बनते हैं. लाइक आपने ये पोस्ट ऑफिस से स्टैंप्स खरीदनी है तो आप बिल देंगे, वहां से आपको पैसा मिल जाएगा. पैसा मिलेगा, आप पैसा जाके जाके अपने क्लर्क को भेजेंगे या खुद जाएंगे या जो भी आपका ऑफिसर होगा वो जाएगा और वहां से स्टैंप्स खरीद के ले आएगा जो आपके कॉलेज की डाक के लिए यूज होती रहेंगी. तो जो मनी ड्रा करते हैं उसके मुख्तलिफ हेड्स होते हैं. मैंने एक एग्जांपल दी. आपने कोई स्कॉलरशिप देना है, आपने कोई ऑनरेरियम देना है, आपने कोई और चीज़ देनी है, यू कैन ड्रा मनी. सो कैश हैंडलिंग है कि आपके पास कैश आएगा, ये कैश फिर आके कैश बुक के ऊपर एंटर होता है जब आप कैश लेते हैं कि इतने पैसे मुझे आ जाए, और उसकी फिर आगे डिसबर्समेंट कैश बुक में लिखी जाती है कि ये कैश बुक में पैसे कैश पे आए और ये डिसबर्स हो गए. और डिसबर्स होने का सेपरेट रिकॉर्ड है, वो आपने वहाँ मेंटेन करना होता है.
द प्रिपेयर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट की एक्सेस एंड सरेंडर की शीट्स बनती हैं। तो ये परफॉर्मा है, वो शीट्स हैं, ये टाइम मिला तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो ये शीट्स जो है बेसिकली ये डेवलप करनी होती हैं, इनमें भी कैश को बताना होता है कि इतने पैसे इधर कर दें, इतने पैसे इधर कर दें। टू इंश्योर यूज ऑफ फंड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट वन, आपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खर्च करना है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फंड खर्च करने के लिए नहीं दिए गए। वो एम्बेजलमेंट है, वो फ्रॉड है, वो डेफिनेटली अगर वो डिडक्ट हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट है। टू इंश्योर इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग, अगेन इंपॉर्टेंट, आपने इकोनॉमी को भी ख्याल रखना है और एफिशिएंसी का भी ख्याल कर। आपने इसीलिए कहा जाता है कि लोएस्ट से खरीदें, कंपटीशन कराएं, मार्केट घूमें, 3 कोटेशंस लें, ज्यादा कोटेशंस भी आप ले सकते हैं, मिनिमम 3 की बात हो रही है, आप घूमते रहें, जो सबसे अच्छी और सबसे सस्ता दे रहे हैं वहीं से खरीदें। सो जैसे आप अपने पैसों के लिए करते होते हैं। सो पब्लिक स्पेंडिंग को एफिशिएंसी के साथ और इकोनॉमी के साथ खर्च करें। टू प्रिपेयर मंथली एंड एनुअल अकाउंट्स, आपको मंथली और एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैश हैंडलिंग से रिलेटेड और चेक से रिलेटेड। अब मोस्टली कैश से चेक की तरफ चला गया, बट एनी हाउ इफ कैश इज अवेलेबल, अगेन मंथली और एनुअल स्टेटमेंट्स बनेंगे। टू अरेंज ऑडिट एंड सेटलमेंट्स ऑफ ऑडिट पैरा, अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कैश कहाँ से आ गया ऑडिट पैरा में, आपके ख्याल में सवाल आ रहा होगा। कैश आ गया इस तरह से कि अगर कोई रिकवरी का ऑडिट पैरा था कि आपने अपने टीचर्स को तनख्वाह देते हुए गलत अलाउंस लगा दिया या रेट गलत लगा दिया, उनकी रिकवरी करें, तो आप अपने टीचर्स की रिकवरी कर रहे होते हैं, प्रोफेसर्स की रिकवरी हो रही होती है, या क्लर्क्स की रिकवरी हो रही होती है, और स्टाफ की हो रही होती है। वो कैश वापस जमा हो रहा होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, वो डिडक्ट हो रहा होता है और उतना जमा हो रहा होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। इसी तरह से ऑडिट पैरा के सेटलमेंट के साथ ये फैसला होता है कि ये पैरा ऑडिट पैरा सेटल हो गया, आप अपने पैसे जो आपने रिकवर किए हैं उसकी रिसीट दिखा दें, तो ये भी कैश से रिलेटेड है। जब आप उनको रिसीट्स देंगे कि ये हमने ट्रेजरी में जमा करा दिया, पैरा विल बी सेटल अकॉर्डिंगली। टू डील विद एम्प्लॉयज रिलेटेड फंड, जीपी फंड, बेनेवलेंट फंड एट ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। सो इससे डील करते हुए भी डीडीओ ने पूरा ख्याल रखना है कि किसका जीपी फंड का, अब 80% आप जीपी फंड ले सकते हैं, कौन सी एज तक ले सकते हैं, ठीक है, कितना कैसे रिटर्न होता है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे बनती हैं, यू नो वेरी वेल। सो अगेन जीपी फंड का एक रजिस्टर डेवलप होता है, हर कॉलेज में भी होता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में होता है। बेनेवोलेंट फंड आपका डिडक्ट हो रहा होता है, आपके बच्चों के लिए पैसे आते हैं, चेक्स आते हैं उनकी एजुकेशन के लिए, और बाकी मैरिज ग्रांट आती है, इसी तरह से तदफीन के लिए पैसे मिलते हैं, सो मैनी हेड्स, यू नो वेरी वेल। सो टू डील ऑल दीज फंड्स विच आर अवेलेबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द यू कैन से एम्प्लॉयज। प्रेपरेशन ऑफ कंटीजेंट बिल्स, ये जितने जो बिल्स होते हैं इनको कंटीजेंट बिल बोला जाता है। ये जितने बिल्स आप जमा कराते हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में, इनको कंटीजेंट, क्योंकि ये कंटीजेंट एक्सपेंडिचर होता है। कंटीजेंट से मुराद ये है कि रूटीन का एक्सपेंडिचर या रेगुलर एक्सपेंडिचर, उसे कंटीजेंट कहा जाता है। विदड्रॉल ऑफ अमाउंट फॉर इमीडिएट डिसबर्समेंट, इसके पैसे आते हैं फौरन ही, आप अपने पास नहीं रख सकते। याद रखें कि डीडीओ जितनी देर अपने पास पैसा रखेगा, वो सीरियस ऑब्जर्वेशन है कि वो क्यों पैसे लेके बैठा हुआ था। अगर जरूरत नहीं थी, नहीं निकालने चाहिए थे। अगर निकाल लिए, then these funds should be dispersed. These funds should be paid to the relevant officer or employee or the authority or vendor, whatsoever the detail is. Every expenditure within sanction budget, monthly reconciliation of accounts with DDO, TO, AG, monthly reconciliation करनी है, sanction budget के अंदर रहना है। मेंटेन कैश बुक ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे कैश बुक मेंटेन होनी है। कैश बुक में चेक्स भी एंटर होते हैं और कैश भी एंटर होता है। क्लेम्स बेस्ड ऑन सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस बुक, याद रखिएगा कि सर्विस बुक के अंदर जो है, ये जो नॉन गजटेड ऑफिसर एम्प्लॉयज होते हैं, इनकी सर्विस बुक्स होती हैं, इनके अंदर आप उनकी, जब वो प्रमोट होते हैं तो वो उनको बाकायदा आपने उनकी प्रमोशन की एंट्रीज करनी होती हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह की एंट्रीज करते हैं। ये सर्विस बुक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस वेट करता है, अप्रूव करता है, और उसके बाद उसकी तनख्वाहें जारी होती हैं। तो इनको सैंक्शन स्ट्रेंथ के साथ शेयर करना होता है। मसलन एक आदमी क्लर्क से प्रमोट होके जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क हो गए, तो आपके पास सीनियर क्लर्क की सीट थी, सैंक्शन सीट थी, जहां वो ज्वाइन कर गया, तो आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ देखनी है। अगर वो प्रमोट हो गया, नहीं तो दूसरे कॉलेज में चला जाए जहां और जगह पड़ी हुई। अगर आपके पास वेकेंट पोस्ट है, आपको ज्वाइन कर जाएगा। अब वो सीनियर क्लर्क हो गया हुआ है, अब उसकी सर्विस बुक चेंज हो जाएगी, सर्विस बुक में एंट्री हो जाएगी। अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटी टू मेंटेन सर्विस बुक्स, टू प्रिपेयर सर्विस बुक्स, to verify service books from the district accounts office and to maintain the security of the service book as well. गुम हो गई सर्विस बुक्स, उन आदमियों की पेंशन नहीं मिलती, उन लोगों को उनकी पेंशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एनीहो, नेक्स्ट मैम प्लीज।
एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डीडीओ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आ गया। वो तो फाइनेंशियल रोल्स आ गए थे, ये अब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में डीडीओ ने ये बताना है कि ये एम्प्लॉय रिक्रूट हो सकता है, ये जैसे पहले था अब तो खत्म कर दिया गया कि 17A के तहत रिक्रूट होगा, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट रिक्रूट होगा, या डेली वेजेस रिक्रूट हो सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूट होगा, ये जैसे अब CTIs आते हैं, या बाकी आप लोग रखते हैं अपने, या कोई फंड्स के ऊपर लोगों को आप हायर कर लेते हैं। सो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय में डीडीओ का रोल है। उसने पैसा कहाँ से देना है, कौन सी सीट के अगेंस्ट आपने रिक्रूट करना है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओ टू वेरीफाई। रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओ। ये हमारे यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। तमाम वो क्लर्क्स जो बिल बनाते हैं, दे शुड बी ट्रेंड। आप उन्हें भेजें डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, फ्री हो जाती हैं। कहीं भी MPDD में तो ट्रेनिंग होती है, वहाँ तो कोई पैसे नहीं लिए जाते, वो तो रैश भी फराहम करते हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स की एकेडमी है, वो ट्रेनिंग कराती है DDOs की, वो कोई पैसे नहीं लेते। ठीक है ना जी, सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा है। सो you have to arrange trainings of your employees which who are dealing with the मतलब मुझे तो मेरे तो ये है कि जी सारों की ट्रेनिंग, जैसे आप लोगों की अब ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक साइड पे है या चाहे वो नॉन एकेडमिक साइड पे है, चाहे वो फाइनेंस को देख रहा है या चाहे वो एसेट्स को देख रहा है। एवरी पर्सन शुड बी यू कैन से available for training and attend trainings, mandatory trainings as well. Next, promotion related matters, transfer posting rules and policies. ट्रांसफर पोस्टिंग रूल्स एंड पॉलिसीज, द DDO शुड नो कि किसको ट्रांसफर करके कोई बंदा मेरे पास आएगा, इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसीज क्या हैं, किसको ज्वाइन कराना है, किसको ज्वाइन नहीं कराना। काइंड्स ऑफ लीव्स DDO शुड नो कि ये स्टडी लीव पे जाएगा, ये एक्स पाकिस्तान स्टडी लीव है या विद इन पाकिस्तान स्टडी लीव है, ये एक्स पाकिस्तान डेपुटेशन है या विद इन पाकिस्तान डेपुटेशन है, ये कैजुअल लीव है, ये मेडिकल लीव है, ये कंपलसरी लीव है, ये कोविड की वजह से लीव मिल रही है। कोविड को आपको पता है कि कोविड को भी मेडिकल लीव से ओवर एंड अबव कर दिया गया था। ये मटर्निटी लीव है, ये पैटर्निटी लीव है, सो मेनी डिटेल। सो ही शुड नो। तो सबके रूल्स डिफरेंट हैं। अब पैटर्निटी लीव जो है वो 7 days की है जो मेल को मिलती है, और मैटर्निटी लीव 90 days की है जो फीमेल को मिलती है। तो इनके रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो उसके मुताबिक आप इनको डील कर सकते हैं। देन रिटायरमेंट रिलेटेड टू मैटर्स, रिटायरमेंट रिलेटेड मैटर्स ये हैं कि एक आदमी रिटायर हुआ है, क्या करना है, उसके ऑडिट पैराज देखने हैं, उसकी बुक कैसे क्लोज होगी। अब उसकी बुक क्लोज हो रही है, ऑफिस की बुक जो है या जिसके ऊपर उसने काम कर रहा था, नाउ ही इज रिटायर्ड पर्सन, तो कैसे करेंगे, उसकी कोई रिकवरी है, उसका कोई ऑडिट पैरा है, उसने कोई नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट लेना है, उसने कहाँ से मूव करना है, उसका परफॉर्मा फिल कैसे होना है, ये कैसे हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next, to assist and guide the office administration for financial matters. Okay, if the DDO is the vice principal, if the DDO is the vice principal, he will assist the principal regarding the administrative matters and regarding the financial matters. ये भी उसकी responsibility में आता है। To manage the property and asset, again it is the responsibility of the DDO कि उस कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है, उसके जो एसेट्स हैं, आपको पता है कि स्टॉक रजिस्टर होता है, एसेट रजिस्टर होता है, जिसमें सारे एसेट्स जो हैं वो आपके दर्ज होते हैं। सो यू हैव टू मैनेज दिस प्रॉपर्टी। आपकी लैंड कितनी है, आपका बिल्डिंग का पूरी डिटेल क्या है, इसके अलावा आपके पास फर्नीचर कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, ऑक्शनेबल कितनी है, यूज में कितनी है, स्टोर में कितनी पड़ी हुई हैं, स्टोर से बाहर कितनी है। सो देर आर टू टाइप ऑफ स्टोर, एक जिसे रनिंग स्टोर कहते हैं, वो एक्टिव स्टोर होता है, एक डेड स्टॉक रजिस्टर होता है जो डेड स्टोर के साथ लिंक्ड होता है। सो टू कंट्रोल एंड मेंटेन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है। टू ऑक्शन दी अनसर्विसेबल आइटम, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो अनसर्विसेबल आइटम है, ये गिव मी 1 minute। जी सामने, जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, जी जी मैडम, उसको ज्वाइन करता हूँ मैं। जी मैडम, जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू। तो आई हैव टू कंप्लीट इट क्योंकि मुझे नेक्स्ट में भी जाना है। सो मैं इसको क्विकली लेके आगे चलता हूँ। अनसर्विसेबल आइटम्स जो हैं वो जो यूज़ में नहीं होते, बट आप उनको फेंक नहीं सकते।
प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप उसका एक्शन कैसे करेंगे। कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह इस पे भी बात होगी कि एक्शन करने का तरीका क्या है। ट्रांसपोर्ट की एक्शन सेपरेट तरीके से होती है, बाकी चीज़ों की एक्शन सेपरेट तरीके से। टू हैंडल द कोर्ट केसेस, अगेन द इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द डीडीओ। कोर्ट केसेस में भी उसकी इंपॉर्टेंस है। मोस्टली कोर्ट केसेस जो हैं वो आपकी सीनियरिटी से, आपकी प्रमोशन से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके और इश्यूज के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो डीडीओ उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट मैम प्लीज। रिसीट कलेक्शन, अब आपके यहाँ रिसीट्स अब ऑनलाइन हो गई हुई हैं कैश सिस्टम के तहत, बट रिसीट अगर हैं कहीं डीडीओ के पास, यानी वो अमाउंट को कलेक्ट करता है, कोई सर्विसेज के अगेंस्ट कलेक्ट करता है। कॉलेजेस में थोड़ी बहुत रिसीट अब भी है, बट मोस्टली तो जो आपकी बच्चों की फी है वो तो ऑनलाइन चली गई है। सो तो रिसीट्स के प्रोसीजर क्या है? टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसीट्स, उसको स्टेटमेंट बनानी है कि आज किस हेड में कहाँ से मुझे पैसे आए हैं। फिर रिसीट को कलेक्ट करना है, जिसका ड्यू रिसीट है, अगर कोई मंथली बेसिस पे कलेक्ट होनी है तो उसको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट किस्त कब जमा होनी है, किस तरीके से जमा हो रही है। वो उसकी डिटेल बनाता जाए, किसकी शार्ट है, किसने पे की है, किसने पे नहीं की। टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स, अगर कोई डिफॉल्ट कर गया, उसकी रिसीट नहीं दे रहा, तो उसके अलावा लीगल एक्शंस को उसका पता हो कि इसके लीगल एक्शन कौन से लेने होंगे, कहाँ जाना होगा, किस तरह से हमने इसको हैंडल करना होगा। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओ। टू डिपॉजिट कलेक्टेड रिसीट इन द ट्रेजरी इन द रेलिवेंट हेड ऑफ अकाउंट्स, जिस रेलिवेंट हेड में पैसे जमा कराने हैं, आपने जीएसटी को पीएसटी में जमा करा दिया और पीएसटी को मीडिया टैक्स में जमा करा दिया, तो आपने रेलिवेंट हेड में पैसे जमा नहीं कराए, कराया आपने टैक्स में है। बट जीएसटी ने जीएसटी में जाना है, जीएसटी आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट देख रही है, पीएसटी पंजाब गवर्नमेंट देख रही है, मीडिया टैक्स जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का है, वो सेपरेट है, पीआरए पंजाब गवर्नमेंट का है, वो सेपरेट है। सो रेलिवेंट हेड में पैसे जमा कराने, अगेन ये डीडीओ को मालूम होगा तो वो करेगा। टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस, ऑडिट पर्पस के लिए ये रिसीट का रिकॉर्ड भी प्रिपेयर करे, वो एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड भी प्रिपेयर करे, रिसीट का भी। टू एनालाइज द एनुअल रिसीट फ्लो, एनुअल रिसीट फ्लो, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, अगर आप ऐसा इदारा है कि जो गवर्नमेंट को पैसे अर्न करके देता है, तो आप गवर्नमेंट की अर्निंग हैंड हैं। गवर्नमेंट ने हर साल देखना है कि मेरे बजट में इधर से इतने पैसे आते हैं, आप कलेक्ट करके देते हैं उसको, तो आप कलेक्ट ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आपने वो एनुअल रिसीट फ्लो को देखना है कि एफबीआर आपसे पूछ रहा है, प्रोविंस आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने पैसे आपने इकट्ठे कर लिए हैं, कितने ट्रेजरी में जमा करा दिए। इन केस अगर ऐसा है, then you are responsible for preparation of annual receipt flow to include in the budget estimate। आपने फिर बजट एस्टिमेट में इसको एज इनकम शो करना है कि ये मेरी इनकम है जो बजट में आई है, और ये इनकम है जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, और मेरा इस तरह एक्सपेंडिचर होगा कि मैं अपनी इनकम भी यूज करूंगा, अगर होगी मुझे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो इतनी मैंने गवर्नमेंट को दी है, और फिर गवर्नमेंट मुझे देगी, और फिर दिस वुड बी द मेरी, यू कैन से दिस वुड बी द overall financial statement of this institution based on the receipts as well as the proposed expenditure. Next, ma'am, please. Next, ma'am, please. बिल प्रिपरेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बजट इन द रेलिवेंट हेड, देखें उस हेड में पैसे हैं तो बिल बनाएं। एलिजिबिलिटी ऑफ क्लेम, मैंने कहा मुझे टीए दे दें, तो मेरे टीए का रेट क्या है, मैं ग्रेड 17 में हूँ, 18 में हूँ, 19 में हूँ, मेरा क्या रेट है, हर का रेट अलग है। मेरी नाइट्स कितनी है, उन नाइट्स की डिटेल अलग है। मैंने होटल पे स्टे किया है, मैंने ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल की है, या मैं खुद बस पे गया हूँ, या मैं जहाज़ पे गया हूँ, व्हाट्स एवर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एलिजिबिलिटी ऑफ क्लेम को चेक करना है। फिलिंग ऑफ बिल फॉर्म है, फिर वो आपका टीए बिल फिल प्रॉपरली हुआ है, डीडीओ ने कंफर्म करना है। करेक्शन ऑफ अप्लीकेबल टैक्स, अगर मैंने रेट गलत लगा दिया अपनी डेली का, तो वो करेक्ट करेगा कि नहीं जी आपकी ये डेली नहीं है, आपकी ये डेली है आजकल। इसी तरह डिडक्शन ऑफ टैक्सेस है, जो टैक्स उसके ऊपर है वो डिडक्ट करेगा और रिकवरेबल अमाउंट को शो करेगा। अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी से वो टीए बिल किसने अप्रूव करना है, अथॉरिटी से अप्रूव कराएगा, व्हाट्स एवर द अथॉरिटी है। वो डिप्टी डायरेक्टर है, डीपीआई है, जो भी है, जो अथॉरिटी है। आई एम नॉट, यू कैन से, कन्फाइनिंग इट टू दी टू स्पेसिफिक पर्सन, व्हाट्स एवर द अथॉरिटी इज। देन अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, कंप्लीशन ऑफ बिल, बिल कंप्लीट हो गया और रेलेवेंट अटैचमेंट साथ लगाए उसके साथ, अगर उसकी टिकट्स लगनी है, अगर उसके साथ उसका होटल का बिल लगना है, उसके अलावा उसने जो टोल टैक्स पे किया हुआ है मोटरवे का या किसी और मेन हाईवे का, वो उसके साथ लगना है, वो उसके साथ अटैच करें, ये रेलेवेंट अटैचमेंट्स हैं।
फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ बिल है, बिल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस चला गया, कलेक्शन ऑफ चेक, वहां से चेक लें या उस आदमी के अकाउंट में चला जाएगा, डिपॉजिट ऑफ टैक्स, टैक्स को सेपरेट डिपॉजिट करवाएं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रजिस्टर, कॉपीज ऑफ बिल रिसीट्स, रजिस्टर बनाएं जिसके अंदर टीए बिलों की कापियां मौजूद होंगी, एंट्रीज होंगी, वो बाद में चेक किए जाएंगे कि आपके बिल ठीक पास हुए थे वगैरह वगैरह। ऑडिटेबल रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट मैम प्लीज। रेलिवेंट बुक्स डॉक्यूमेंट्स एंड रूल्स, ये वो किताबें हैं जी जो हर डीडीओ के पास होनी चाहिए, उसकी उसकी दराज में होनी चाहिए, उसके टेबल पे होनी चाहिए, उसकी अलमीरा में होनी चाहिए। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल 2006 वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ऑनलाइन अवेलेबल है। नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, इनको कलेक्ट करें, हार्ड कापीज अपने पास मेंटेन करें, फाइल में लगाएं। ऑडिट कोड एंड मैनुअल ऑनलाइन अवेलेबल है। पेंशन रूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। पेपरा रूल्स 2014 ऑनलाइन अवेलेबल हैं। टैक्स रूल्स, ए हैंड बुक फॉर डीडीओ, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये हर जगह से मिल जाती है, आप उर्दू बाजार से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। पीएफआर पंजाब फाइनेंशियल रूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ट्रेजरी रूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बजट मैनुअल एंड गाइडलाइंस फाइनेंस डिपार्टमेंट एनुअल बेसिस पे मौजूद होती हैं। ये इस साल का इस वक्त मौजूद है, जब 26-27 स्टार्ट होगा उसके भी गाइडलाइंस और मैनुअल आ जाएगा। एडीपी गाइडलाइन आज भी मौजूद है एडीपी की वेबसाइट पे, यू कैन सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। each and every DDO go through all these documents and build the capacity to handle the financial matters। ये आसान काम है बट इसके लिए सीखना जरूरी है, इससे घबराना नहीं होता, इससे प्रॉब्लम में नहीं है। पब्लिक मनी दी इसलिए जाती है कि आप यूज करें, बट प्रॉपर यूज की बात है, स्पेंडिंग ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट मैम प्लीज। दीज आर परफॉर्मांस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये परफॉर्मांस हैं। आप इनको काइंडली देखिए। ये BM1 है, अगर इसमें सिर्फ कॉलम 6 देख लीजिएगा, मैं क्विकली आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट का टाइम हो गया हुआ है। एक्चुअल रिसीट 22-23, अब मैं सिर्फ यहाँ कॉलम 6 पे हूँ। ये एक्चुअल रिसीट से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई रिसीट है तो ये परफॉर्मा आप फिल करके भेजेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ये एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स का परफॉर्मा है। और ये BM1 बजट मैनुअल 1, ये परफॉर्मा 1 है। अगर रिसीट्स होगा तो इस तरह फिल करके आप भेजेंगे, ये परफॉर्मा ऑनलाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट मैम प्लीज। ये BM2 है, एस्टिमेट्स ऑफ परमानेंट एक्सपेंडिचर, जो आपके परमानेंट स्टाफ होते हैं, अगर आप देखें सीरियल नंबर 10 में, कॉलम 10 में, तो मेल फीमेल टोटल, वो पिछले साल की पोस्ट 23-24 की पोस्ट भी पूछ रहा है, वो 24-25 की पूछ रहा है, साल चेंज होते जाएंगे, वो टोटल पूछता है पिछले साल कितने लोग बंदे आपके पास थे, आप भी इस दफा कितने बंदे हैं, फिर अकॉर्डिंगली उनका आगे आगे आपसे वो पूछता है। तो नेक्स्ट लेक्चर की कॉल है, काइंडली मुझे जरा इजाजत दीजिए। जी मैम, मैं आपको 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। मैडम 2 मिनट में करता हूँ, मैं अभी पिछले लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1-2 मिनट दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। सो BM2 है, एस्टिमेट्स ऑफ परमानेंट एक्सपेंडिचर। ये अगर आपका जो परमानेंट स्टाफ का रेगुलर बजट बनता है वो इस परफॉर्मे पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट मैम प्लीज। ये जो उसी परमानेंट का परफॉर्मा ये है BM3 का, जिसमें आप अलाउंसेस की डिटेल देते हैं। ये अलाउंसेस की डिटेल है, हाउस रेंट कितना है, कन्वेंस कितना है, डेजिग्नेशन इसका क्या है, मेडिकल चार्जेस हैं, लीव सैलरी ले रहा है नहीं रहा है, बाकी कुछ डिटेल है, वो टोटल अलाउंसेस आप डाल के भेज देते हैं। जिसका एडिशन होता है उसका एडिशन आगे डलता जाता है, जैसे PhD अलाउंस होगा, MPhil अलाउंस होगा, कोई और होगा। नेक्स्ट मैम प्लीज। मैम जरा चेंज कीजिए, नेक्स्ट कीजिए प्लीज। मैम आप अवेलेबल हैं, काइंडली नेक्स्ट कीजिए। अ, जी सर, वो इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया था। ओके, मैं कर। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये नेक्स्ट आप देख लें कि ये सैंक्शन पोस्ट फॉर परमानेंट एक्सपेंडिचर, अब उसने उसको कंसालिडेट कर दिया है कि जी अगर आपने इनको इनको मर्ज करेंगे तो उसका पर्सनल नंबर भी लिखेंगे, BS भी लिखेंगे, मेल फीमेल भी लिखेंगे, बेसिक पे भी लिखेंगे, एनुअल इंक्रीमेंट भी लिखेंगे, और फिर इस तरह से इसको टोटल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट मैम प्लीज।
जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएनई का परफॉर्मा है जी, एसएनई की बात हुई थी। ये एसएनई का परफॉर्मा है, यही यूज होता है हर जगह जब आप नई सीट क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट का नाम है, उसके बाद ग्रांट नंबर लिखते हैं, ग्रांट का नेम है, फंड सेंटर आपका कॉलेज का सेंटर होता है, कोड होता है कॉलेज का, डीडीओ का, सब डिटेल आपकी फंक्शन होती है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट। फिर ये आप देखें सीरियल नंबर 8 से लेकर 19 तक, इसमें उसने पूछा हुआ है कि इसकी सैलरी क्या है, नॉन सैलरी क्या है, 21-22 में था ये पोस्ट, नहीं है, 22-23 में थी, 23-24 में थी, अब क्रिएट कर रहे हैं, पहले थी नहीं थी, इंप्लाइज रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा, नॉन सैलरी एक्सपेंस क्या होगा, टोटल आप कितना इससे मांग रहे हैं। सो दिस इज एसएनई पोस्ट परफॉर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट परफॉर्मा यही यूज हो रहा है जी। नेक्स्ट मैम प्लीज। ये चैलेंजेस हैं, क्विकली मैं देखना चाहता हूँ। डिले इन बजट रिलीज चैलेंज है सबसे बड़ा डीडीओ का। कम्प्लेक्स फाइनेंशियल रूल्स हैं, उनको पढ़ते हुए उसको मुश्किल आती है। मॉनिटरिंग और कंप्लायंस प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी करें, मुश्किल होती है उसकी। कोऑर्डिनेशन विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा होता है, वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, प्रेशर से गुजर रहा होता है। ऑडिट को कंडक्ट कराना और उसको सेटल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चैलेंजेस हैं एक डीडीओ के। इनसे डील कैसे करें? कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपनी कंटिन्यूस अपनी ट्रेनिंग करे और अपनी स्टाफ की ट्रेनिंग कराए। इंटरनल ऑडिट का एक मैकेनिज्म बनाए, अपनी एक टीम बनाए 2-3 लोगों की जो थर्ड पार्टी के तौर पर काम कर रहे हो। अरेंजमेंट फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ कमर्शियल ऑडिट, कमर्शियल ऑडिट के लिए खुद खत लिखे। ये जो आपका डीजी ऑडिट पंजाब करता है, इसे कमर्शियल ऑडिट कहा जाता है। तो वो उसको खुद खत लिखे एनुअल बेसिस पे, साल खत्म हो तो उसकी परेशानी शुरू हो जानी चाहिए कि मेरा ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट पैरास को सेटल कराए। नेक्स्ट है जी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर वर्किंग पेपर ऑफ ऑडिट पैरा। वर्किंग पेपर पे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इस पे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि ये जितना अच्छा बना होगा, ये उसी तरह ही है जिस तरह आप कोर्ट केस की एक रिट पिटीशन अपने बेहतरीन वकील से तैयार करवाते हैं, तब जाके आप केस जीतते हैं। ये भी केस जीतना होता है। दूसरी पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगा के चली गई होती है कि इसने पैसा गलत इस्तेमाल किया, उस इल्जाम को खत्म करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर वर्किंग पेपर। ये वर्किंग पेपर की मैं मेरी तो लाइफ गुजर गई इन चीज़ों को डील करते हुए। वर्किंग पेपर इतना वीक होता है कि ऑडिट पैरा सेटल नहीं होता, वर्किंग पेपर बनाया ही नहीं जाता, हमारे लोग प्रॉपर नहीं बनाते। काइंडली इस पे बहुत ज़रूर है, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं। देन मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीट ऑडिटेबल रिकॉर्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस, इसको एनुअल बेसिस पे बनाया करें और सेपरेट रखा करें। किसी फाइनेंशियल ईयर को दूसरे फाइनेंशियल ईयर के रजिस्टर के साथ मिक्स ना करें। साल क्लोज हो, उसके डॉक्यूमेंट को बांध के कहीं और रख दें, सिंपली कहीं और अलमीरा में लॉक कर दें। दूसरा साल है, उसका पिछले साल से ताल्लुक नहीं है। देन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, देखें ये हमारा अल्लाह ताला का हुक्म भी है, हमारा ईमान भी है कि ट्रांसपेरेंसी, यूज ऑफ मनी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट ओनली है। दिस इज नॉट माई मनी, दिस इज नॉट माई पर्सनल मनी, दिस इज पब्लिक मनी। अल्लाह को जवाबदेही है। यहाँ से अगर आप बच भी गए, ऑडिट से भी बच गए, लोगों से भी बच गए, सब कुछ से बच गए, वहां तो नहीं बचने लगे ना। सो दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वे फॉरवर्ड ये है कि अगर मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करता हूँ, आई एम ट्रांसपेरेंट इन माई मैटर्स, इन माई अफेयर्स, सो आई एम यूजिंग दिस मनी लाइक ए पर्सनल मनी, यानी मेरी फीलिंग ये हो कि ये मेरी जाती फंड है ताकि ज़ाय ना हो, लेकिन ये फीलिंग ना हो कि ये जाती हैं जहां मर्जी यूज करूं। तो इनको जाती समझना भी है, लेकिन जाती फवायद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। ये बहुत क्विकली मुझे करना पड़ा क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, आई एम सॉरी। इसकी बहुत डिटेल है, बहुत लंबा टॉपिक है, बट आई ट्राई टू कंप्लीट इट। आई थिंक मैं कोई क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, सो कोई एक आध कमेंट कर दीजिए प्लीज़, मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ। मैं इसे क्लोज करने लगा हूँ क्योंकि नेक्स्ट को मैंने ज्वाइन करना था 12:15 पे। आई एम लेट ऑलरेडी। ओके मैम, कैन आई लीव हेयर? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।